रहीम रब्बी शरहली सदरी व यसरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? होप यू पीपल आर enjoying good health and enjoying winter season in your cozy beds. I'm also very well, and we are going to do our worksheets today that you have taken from school a day before. It has 2 pages and you have to mention date and classwork at the top of your worksheets. Okay, write down your name on it and start doing it. The question number 1 is rewrite these sentences after putting them in order. ये सारे sentences आपने rewrite करने हैं, इनको ठीक तरह से, ये jumbled हैं sentences, आपने इनको arrange करके और फिर लिखना है. Talking stop, तो हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे? स्टॉप टॉकिंग, फुल स्टॉप. आई मे इन कम, तो मे आई कम इन, एंड यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर री राइटिंग द सेंटेंस. मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क. We are Muslims. We are Muslims. Full stop. My mother is great. My mother is great. My का M should be capital. We eat ice cream. We eat ice cream. Full stop. The first letter of your sentence should be capital, and after that, in the end of the sentence, you have to put full stops. Circle the nouns and underline the verbs from the given passage. Ali and Amin are good friends. उसने बोला है कि nouns को आपने circle करना है और verbs को आपने underline करना है. Ali and Amin are good friends. Ali and Amin are nouns. So circle these 2 words. They both play and read together. Play and read are verbs. Very good. और इसको आपने underline करना है. They often watch TV. And after watching TV, they often watch TV. Watch is a verb, so underline it, and TV is a noun, so circle it. They go to the park. They go. Go is a verb, underline it. Park is a noun, circle it. And pick is also a verb, so underline it. Apple is a noun, so circle it. Trees are also nouns, circle it. They love and respect each other. Love and respect are also verbs, so underline these verbs. Fine. After that, have a look down. Complete the sentences using this and these. This जो होता है वो हम singular के साथ लगाते हैं और these ज़्यादा चीज़ों के साथ या ज़्यादा के साथ लगाते हैं. Dash is a cat. This is a cat. These are dogs. These are rabbits. This is a ball. This is Ali's book. They are Adan's painting. This is a cup. After that, have a look on the next page of your worksheet. It is a comprehension and a missing letter page. And you have to mention date and classwork over it. A missing letter. Home, work. Home पूरा लिखा हुआ है, work के लिए W. Then riddle, RIDDLE. Then butter, DDER. After that, have a look down. Comprehension passage. Read the paragraph and answer the questions. Amna is going to wrap a present. She needs tape, a bow and a box, a tag, scissors and wrapping paper. First, Amna cuts the paper. Next, she tapes it around the box. After that, Amna ties bow on the top. Finally, Amna writes the name on the name on the tag, adds it to the gift. Well, now you have to look the questions. First question is what is Amna going to do? What is Amna going to do? First question was that what is Amna going to do? Amna क्या करने जा रही थी? Amna is going to wrap a present. वो क्या करने लगी थी? वो एक गिफ्ट पैक करने लगी थी.
हाउ मेनी आइटम्स डज आमना नीड टू रैप द गिफ्ट, कितनी चीज़ें उसको चाहिए थी गिफ्ट को पैक करने के लिए. शी नीड्स टेप, अ बो, अ बॉक्स, अ टैग, सीजर्स एंड रैपिंग पेपर. यही चीज़ें चाहिए थी ना उसको. वट इज़ द फर्स्ट थिंग आमना डज, पहली चीज़ जो थी वो आमना ने क्या की थी. अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ फर्स्ट आमना कट्स द पेपर. ही कट्स द पेपर एट फर्स्ट. ही कट्स द पेपर. शी कट्स द पेपर एट फर्स्ट. आमना कट्स द पेपर एट फर्स्ट. ये भी हो सकता है ना. वट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ रैपिंग अ प्रेजेंट. थर्ड स्टेप क्या था. अब फर्स्ट स्टेप तो ये था कि उसने पेपर कट किया. फिर हम ये पैराग्राफ ज़रा गौर से देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि सेकंड क्या है. फर्स्ट है जी उसने पेपर को कट किया. नेक्स्ट शी टेप्स इट अराउंड द बॉक्स. अब वो टेप लगाती है, सेकंड स्टेप. अब थर्ड इसके बाद ही होगा ना. आमना टाइज अ बो ऑन द टॉप. आमना टाइज अ बो ऑन द टॉप. अब आमना जो है वो थर्ड स्टेप क्या है. आमना टाइज अ बो ऑन द टॉप. Very good. After that, you have to submit it on the next day. Thank you for your watching. Allah Hafiz.